We primarily deal with training people in services and training in networking, cybersecurity, cloud, and development. Awesome. That's really great. We do this stuff. This is what we are doing. We have been doing this from the past 9 years. We are more inclined towards training now because we feel education is one thing where there is a vacuum and we can fill that gap. We are more of a mentorship-driven tech training providers. And we have trained more than 2,500 people in Kashmir so far, out of which nearly 2,000 to 2,200 people are placed in top-notch companies. Great. What we focus on is career-oriented training. When I say career, it doesn't mean job. Career का मतलब ये है कि they are financially independent in the next 10-12 years. We try to build a vision in current. Do you have any logo with you? Yeah. You can drop it on my WhatsApp number. Yes, gentlemen over here. नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। Yes. मैं खाली इंटरैक्ट कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहूँगा because this is a complete story. My God, it's a huge story. I would love to hear from you what it is. Yes, मुझे आप WhatsApp पे डाल दीजिए। आपका जहलम ब्रांड से है, बट आपने इसकी स्पेलिंग ए डाल दी है बीच में, ई नहीं है, ई भी ले रखा है। आप लेकिन जहलम ही जाना चाहते थे, इसलिए आपने उसको ए कर दिया। Yes. Last time आप एक प्रोग्राम में थे। Okay, I have a good gathering now. My God, that's really great. Yes, gentlemen over here. मैं एग्रीकल्चर वेजिटेबल सीडलिंग के साथ। Okay, good. क्या नाम है आपकी? मोहम्मद इस्माइल। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने नाम रखा है या कुछ? अभी नहीं रखा, स्टार्टिंग अभी तो नहीं रखा। Yes. मुझे पता है। Have you developed any startup or anything like that? No. Yes, gentlemen over there. My name is Shalimar. I started Mushroom cultivation. Which brand name would have दिया? Yes, student from where? Okay, क्या पढ़ते हैं आप? सोचा है, कुछ ख्याल है? Gentlemen over here. नहीं, खड़ा नहीं होना। See, I'm here representing By.Dr. Ventures. Okay. It's actually helping entrepreneurs, founders at an early stage, through a program to build their business. Great. So what we do there is a bit of a personalized approach because entrepreneurship is a very tough journey in one way. Great. And you need a lot of resilience, and you have someone as a to fall back on, like a backyard, to talk, even if it be something around business or something personal. So we fill in that gap, give access to network, access to knowledge sharing, access to potential capital. So this is what we do around this. Apart from that, I've been an entrepreneur in travel level learnings, and I still look at some sectors where there is social impact work which can help our society. Great, great. So, ladies and gentlemen, a loud applause for the young man over here who is doing a noble cause. I think we should appreciate these efforts. Yes, gentlemen over here. I have started mushroom cultivation. Mushroom cultivation. Great. Any brand name that you have given this? I have given Okay. Yes. And I'm also going to launch my brand. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप घबराए हुए क्यों हैं? मेरे हाथ में दो स्टिक्स हैं। No, I think maybe it अरे यार ये कुछ नहीं है, ये सब आपको डराते हैं। और ये जो बंदा बैठा हुआ है ना कैमरा के पीछे, माय गॉड, ये तो बहुत तंग करता है, सबसे ज्यादा तंग करता है। यस, मेरा नाम आमिर है और मैं सोपोर से हूँ। अभी मैं अपने एक वेंचर पे काम कर रहा हूँ, माई कैंपस 247 पे। माई कैंपस 247 जी। सो यू आर डेवलपिंग एन ऐप फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस जेंटलमैन ओवर देयर। At home we are having production as startup team. So I just wanted to learn like how to do branding as well for that. Great. Yes. So I'm going to give some the page is over here. Then after it is another
बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे अच्छी तरह से। मैंने थोड़ा सा फार्मर्स की जो शक्तियाँ थी तो उसको मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की वीरेन साहब है अब साथ साथ हमने वैल्यू एडिशन का ट्रेडिंग पैकिंग ब्रांडिंग वगैरह सिखाई उसके साथ साथ हमने एक ब्रांड लॉन्च किया समर कश के नाम से। समर कश लास्ट टाइम आपने ये लॉन्च नहीं किया था? नहीं आप हो रहा है सर काम आप हो रहा है समर ब्रांडिंग वगैरह होगी सर? हो रही है सर अब हमने पलक पर खास कर फोकस किया पलक के और बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आगे हमने यहाँ भी बनाए। Okay, see, you have been going through different sessions. I have also my PPT ready with you. I was trying to get an idea that what you are here or what you are supposed to do over here. So let me start with a small exercise. Kar sakte hain? Yeah, yes. There is no issue? Are you comfortable with language? Yes. Okay, great. आपने कहा मैं मशरूम कल्टीवेशन करूं, यही करना है? Great. आपने भी कहा मैं मशरूम कल्टीवेशन, great. So what do you feel both the two? मशरूम कल्टीवेशन आपके लिए क्या है? ये एक जॉब है आपके लिए और it's your passion that you want to pursue? Sir, my passion. It's your passion. Sure about it? Yes, sure. Great. What about you? Passion. आपने कहा digital marketing. Yes. So what is digital marketing? Is it a dream for you or it's a passion for you? Okay, great. Now my question to all of you. You have to explain your passion. You have to explain your dream in 3 lines. How many lines? Only 3 lines. एक सबसे टॉप पे टाइटल जो 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद में उस टाइटल के अंदर आप 3 लाइंस में अपने पैशन अपने ड्रीम को एक्सप्लेन करिए। वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी सर्विस हो सकती है, वो आप जो सर्विसेज ऑफर करते हैं जो आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट हर बंदा लेगा। Let me see what is on the table today. Can we start? Your time starts now. Achieve excellence, zeal to reach summer kush. I'm just giving an idea. Great, you can go ahead. मैं आज देखना चाहूंगा कि कौन सबसे अपने आइडिया को बेस्ट सेल करता है, and that will be my agenda today. Though I am not a man from marketing, neither I am from branding. किसी ने मेरे साथ में अपने लोगोस शेयर किए? ओके, ग्रेट. Great, I have received a couple of logos. That's great. Yeah, one more logo there. Can you share your number? Yeah, 9622848411. 9622848411. Great, 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 great. I have already received good number of logos. Good. So are we through?
If anybody has completed, please raise your hand so that we'll listen to that gentleman or young lady over here. आपको पता है ये जो ग्रेजुएशन वाला माइंड होता है ना, ये इतना फर्टाइल होता है, आप इसको एक बार क्लिक करके देखिए. You can do wonders. I do have firm belief on it. आपने जो कहा ना, मैं सोचा है मैंने बिजनेस के बारे में. I want to see your dream. What is your dream? How you are expressing your dream? Yes, आपने कुछ लिखा? मैं यहाँ पे I would like to mention over here. Though you might be thinking of that we are having mobile devices and those devices we can do every sort of thing, but do remember this paper pencil approach will never go. We call it as a sketch. When you have something in your mind and you are putting it on a piece of paper, that gives you an entirely different feeling when you see that what you have written or what you have drawn. It can be an image, it can be a statement. But what matters is, are you able to express what's in your mind? That's the $1 million question. That's what I want to see over here. Experts, no, I'm saying the experts say when you write, it's connected to your subconscious mind. Great. See the beauty. That is, experience speaks. Am I correct? Great. Yes. I have 3 words in my mind. Not in mind. I don't want words from your mind. Yeah, I just want to Okay, express the fine. thought. Okay, one second. Let me put it like this. आप सब लोग कहते हैं that we are all entrepreneurs. Am I correct? Do remember this, that listening is very important. When a gentleman over here is speaking those 3 words, listen them attentively. And once you listen to it, try to correlate with your way of thinking. And unless and until you don't give space to other people, you won't be able to excel. Let's start this exercise from over here. Yes, gentlemen. That is growth, competitive. And promise. Okay, fine. Though I don't agree with this promise word, I do treat it as sustainability. Because this is more related to, are you able to keep the promise with the audience? Are you able to keep the promise with your customers? If it is true, then it is sustainable and consistent as well. So he has given this his whole passion in 3 words. Let's hear from gentleman over here. Yes. कोई मसला नहीं. Next. Okay, no issue. You can take your time. You did mention that education is the main sector wherein you are working. My perception is, can you explain your sector? How beautiful your sector, your services are in comparison to others? You can write 3 lines for that. I have a positioning statement. I can. 3 lines you can write. Afterwards we can hear. Yes. I've written that down. Yes. I have lines. Great. To achieve the target, what I want. Is everybody hearing me? What is the first statement? To achieve the target, what he has planned. The second is to give best product in the society. To give best product to the society. Great. So you are mentioning society as well. Great. Next. Yes. Our visit. Stay healthy, stay safe. Stay healthy, stay safe. Okay, great. Do not compromise on your health. Okay. Health is wealth. Health is wealth. So this is a complete story. Try to understand this. What was your first statement? Stay healthy, stay safe. Stay healthy, stay safe. Then what next? Do not compromise on your health. Okay. Health is wealth. Now, let's try to correlate it. हम सब लोग जानते हैं कि हमें किसका मैसेज, हमें देखना है किसका मैसेज हमें बहुत जल्दी समझ में आता है. इनका मैसेज क्रिस्प, प्रिसाइज, कंसाइज. इनका पहला 2 स्टेटमेंट समझ में आ रहा है. और जो ही ये कह रहे हैं डोंट कंप्रोमाइज, हम लॉस्ट होना शुरू होते हैं.
Are you with me? Are we together? So what did she say? Stay healthy and stay safe. Don't compromise. Ab kahani badi shuru ho gayi. So try to be very precise and concise. Next. Quality. What else? Quality. It's a huge word. कोई बात नहीं है. Provide quality quantity plus A-to-Z management. Great. You did mention quality material. A-to-Z management. So what do you mean by A to Z? Is there anybody over here understanding? A to Z means एक ही शॉप पे सारा काम होगा, starting से लेके end तक. So you are giving a feeling to the customer, I am a one-stop solution, which is giving you from inception till maturity everything what you require. Fine? Next. Salik. Fresh milk from farms. ये farm जरूरी बोलना है. Fresh milk straight to you. Farm to बच्चे का मुंह दिखाना है. Are you with me? It's just reality. You are selling it. You are selling it. Fine? Great. Next. What will be usually feel from commercializers taking help top with थोड़ा सा बड़ा हो रहा है. इसको और थोड़ा सा स्क्वीज करना है अपने आइडिया को. Yes, gentleman over there. Okay. Awesome. That's also very good. Try to see the scenario of the story. थोड़ा सा बड़ा हो रहा है. Yes. Quality education and choice based career. Okay, awesome. Gentlemen, मैं आपका नाम बोलूँगा. इन्होंने भी एजुकेशन का लिया. इन्होंने कहा quality education and choice based curriculum. I'm just giving you an idea that how people are coming up with their ideas. What? Yes, gentlemen over here. Don't have the copy. No issue. No issue. Don't worry. We are here in a family. We are here in a family. Yes. Quality assured yield. Okay. Delivered with care and trust. Okay. My promise stands strong. Promise stands strong. Okay. Care and trust I did find very good, and I would suggest इनका tagline हो सकता है sharing and caring. खाली इतना अगर tagline हो, ये उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हम देखें क्या हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं. आपसे सुनेंगे. Looking for a tagline or your? No. Anything, whatever you write, how you can explain. We are a mentorship. Fine. Tech-driven mentorship. We are mentorship. Mentorship-driven. Tech training providers. Tech training providers. Mentorship-driven. Tech training providers. Yeah. Fine. अब हम इस चीज को जो हमने अभी डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स लेता हूँ. उसके बाद में मैं एक एक करके आपके लोगोस दिया हूँ. This will be my flow for today. First, I'll just give you an idea of what this is all about, what we are here for. Then second, my objective will be हर component का, हर parameter का, whatever we are going to see over here, will be seeing online platforms that are available wherein you can try your expertise and try to come up with something different. That will be our sensitization about technology, then challenge that we do face, then implementations and futuristic scope of this. And based on this, now my first target is, what is it? Brand creation. First हम इनके attributes को देखते हैं और मैं एक tool, I'll be discussing one tool for all of you. That will be Google Sites. Let me tell it in advance. And then आपको sensitize करने के लिए एक आधा attributes जो आप अपने mobile phones पे भी कर सकते हैं. So in brand creation, what is the first point? मुझे कोई भी concept आपको बताने की जरूरत नहीं, because good number of people have come over here. They have spoken n number of entities with respect to these words. But I want to show certain digital tools which will help you in this. What is the first one? Is it important? Is it important? Is it important? Very important. Sure? Yes. Okay, बताइए आपने market research क्या किया जब आपने मुझे यहाँ पे देखा? Yes. Website of organization. नहीं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा. मार्केट रिसर्च आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए. When you came to the classroom, I was already here. So what was your market analysis? What was your observance when you did see a person over here?
What was your market analysis? Did you understand that I am the resource person? No, not at all. You were not, you were standing there. What else? तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी है. Market research is about observance. You have to be observant. और उसके लिए आपको कस्टमर के शूज में आना पड़ेगा. इन्होंने कहा अ रिस्क रेस्टोरेंट ये ओपन करना चाहते हैं. जब तक ये बच्चे को उसके शूज में नहीं देखेंगे तब तक वो नहीं चलेगा. You have to see how a customer perceives this entity, and then only you can come and hit the bullseye with respect to your products. So market research is one of the important attributes which needs to be covered whenever you are going for brand creation. And there are a good number of tools. I'll be giving you the list, and you might have used those tools as well. What is the second one? हमारी एक प्रॉब्लम है. Are you comfortable in Hindi as well as English? Good, no issue. Whenever you feel like that, I'll not use Hindi because there are certain proverbs which I can use. हमारी एक प्रॉब्लम है. Please don't take it otherwise. Being from this part of the valley, हम अपने आप को हरफन मौला समझते हैं. We treat ourselves as the best individuals in this universe. When you say market research, I do say I know it. When it is brand strategy, I do say I know it. When I say the third component, you will say I know it. Resultant is a big zero. Ladies and gentlemen, every attribute has an expertise. To begin with, as a startup, you can take help of certain digital tools, and then you can come up with something different. But at the end of the day, you may require services of experts in these domains. You should not think of that हाँ मुझे अभी हर कोई जॉब खुद कर रहा है मैं कर सकता हूँ. Your idea is more valuable, and then there are a good number of people who can help you in this. Then we'll be going for brand strategy. What are the tools available? Then what is next? मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं इन दोनों को ज्यादा डील नहीं करता, बट मैं इसको मानता हूँ he is the king of brand creation. और ब्रांड क्रिएशन आपकी कब होगी? जब आपको ये पता हो कि मेरा ब्रांड क्या है. मेरा ब्रांड खाली इधर नहीं होना चाहिए. You have to live that brand first. Are we together? Are we together? मैंने किसी एक पर्सन से कहा था that आपसे मैंने एक स्टेटमेंट अभी कहा था. आप बोलेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में. What was it? ना हिना पिकल्स. फिर से बोलिए एक बार. एक मिनट खड़े हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं. इधर पानी बाद में पिएंगे. Today you have a good number of entrepreneurs in front of you. You have to explain beauty of your product within 1 minute. Can you just explain? No, don't worry. I said मैं आपके साथ में खड़ा हूँ. No issue at all. आपका पिकल है ना, अपने पिकल के बारे में बोलिए. कोई भी लैंग्वेज में बोलिए जो आपको अच्छी लगे. कोई बात नहीं, बोले. Ladies and gentlemen, do remember we are in a family. अगर हम यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं? अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने के लिए नहीं आए हैं. हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं. And believe me, there are a good number of people in this particular home can accept this particular statement. Whenever I do come in a session, I treat myself as a learner, and with every interaction I do learn. I never ever come as a teacher. Are you with me? I am a student, so I am going to learn from. What's your good name? Our aim is to basically produce high quality and safe drinks. Great, great. A loud applause for that lady. आप मेरे साथ में रुक सकते हैं 2 मिनट? ठीक है. ईमानदारी बताइए, क्या आपको लगता है कि ये इनका पैशन है ये प्रोडक्ट? मुझे पैशन नहीं दिखा. मुझे ये दिखा कि इनके फादर साहब ने जबरदस्ती इनको धक्का दे दिया, कहा कि ये बिजनेस करो. एग्रीड? आपकी आवाज में, आपके एक्सप्रेशन में
ये दिखना चाहिए कि that this is really the passion that you are having. Are you with me? हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? सीखने, ठीक है ना? कोई और मुझे हेल्प कर सकता? बैठ जाइए. Thank you. And do remember there are a good number of things which we need to understand. मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था आपका? ब्रांडिंग एलिमेंट्स, यही कहा था. Then there is fourth important attribute जो हम आजकल यूज करते हैं, that is website development. After branding elements, what's our next attribute? Website, which is very important. But मैं यहाँ पे website development की बात नहीं करूँगा. I'm not a coder. My concept for entrepreneurs is website development without coding. Mobile application development without coding. Because you are entrepreneurs. अब आप प्रोग्रामर भी बनेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे. No, मेरे पल्ले नहीं पड़ता. मैं मानता हूँ that you should be having a Word document and you should be able to come up with a website within 10, 15, 20, half an hour. Are we together? Great. Then our next point, what we are going to understand is that is content marketing. हम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे. इरफान साहब मुझे थोड़ा सा बियर्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए. डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जो भी इंसान है उसको कंटेंट की वैल्यू को पता. If you really want to understand what is the value of this content, then ask any digital marketing person that what this value of content is. Content is very important. अब हम क्या करते हैं? I'll take an example. हमने वेबसाइट बनाई Kirmani.in. अब मुझे ये दिखाना है SEO में कि ये सबसे टॉप पे दिखना चाहिए. जब आप गूगल पे सर्च करें तो वो वहां पे टॉप पे आना चाहिए. Then there are certain mechanisms. तो अब मैं क्या करने लग गया? मैं उन वर्ड्स, मैं मैकेनिज्म को देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ. Now I am forcing those words into my text. Resultant is for half an hour my website gets highlighted and after that it is blacklisted because I am forcefully using those words. So therefore you have to use a natural mechanism of developing content, which is very important for building a brand. Do remember what was our point? Content marketing. But content marketing की जब हम बात करते हैं, you have to design the content in such a fashion that it is revealing the that particular fashion. Is it fine? Okay, then our next point will be that every one of us is very comfortable with, that is social media presence. हमने पहला पॉइंट ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ कहा, फिर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करी, फिर हमने कंटेंट की बात करी, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सोशल मीडिया प्रेजेंस. इज देयर एनीबॉडी हु इज नॉट हैविंग एनी सोशल मीडिया प्रेजेंस? यू नो यू गुड नेम? मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो फिर खत्म हो गई कहानी खत्म हो गई. अब फिर तो नहीं चलेगा. लेकिन क्या हमारी व्हाट्सएप प्रेजेंस है या क्या हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस है? वी नीड टू पॉन्डर ऑन दैट. मैं अपने प्रोडक्ट की जब बात करता हूं, देन आई हैव टू स्टक टू इट. अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, एंड व्हेनेवर देयर इज अ क्यूरी, हाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग टू दैट क्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना टाइम लेते हैं उस क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. बट व्हाट वी डू, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल सिनेरियो. कि प्रोडक्ट मेरा है स्किन प्रोडक्ट, और मैं बात करता हूं कि स्किन को कैसे ठीक करना चाहिए, ये तब भी रिलेवेंट होगा. Am I correct? बट इसी में मैं ये कह रहा हूं, यू शुड नॉट टेक नॉन-वेज आइटम्स. Is it relevant? No. Why you are creating controversy only to attract more hits? No, you should not do that. You have to be very much cautious when you are uploading content on your web page that you have created for developing a social media presence. So your content needs to be designed in a beautiful fashion, but while commenting on others or while creating a story, you have to ensure that it's related to your product, it's related to your service. Is it fine? Can you go through this? We were talking about branding elements. What do you mean by that? I'll come to it. I'm just giving you the flow. Just wait for 5 to 10 I minutes. didn't get the brand strategy and the brand element. I'm here. I'll not leave this place. I'll give you the tools as well. Don't worry. Then what is next?
आप में से कितने लोग ईमेल मार्केटिंग यूज करते हैं? Yes. It's a great thing. Yes, it is dead, but we still use it in digital marketing. Yes. Email marketing को use करते हैं? Which tool are you using? Zoho. Monkey survey. Great. Have you heard about MailChimp? Yes. Awesome tool. MailChimp आप जब भी यूज करेंगे ना, 2000 कॉन्टैक्ट्स तक आपको कोई पैसा नहीं देगा, 2000 के बाद में पैसा देगा। लाइट का कुछ होगा हमारा? एंड देन वी हैव, आप में से कितने लोग YouTube में हमारे सालिक साहब हैं? इनके 1 मिलियन हिट्स हैं। ये बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं। सालिक साहब मेरे सामने। So would you love to have Salik Saab in your YouTube channel or associated with your product? Why do you do that? You are trying to use his influence on your product. This is known as influence partnership. So you are purchasing those people's influence in such a fashion that it will help you in creating more market for your brand. Influence. We do say it as influencer partnership. Is it fine? Then comes your role, that's SEO. SEOs is there. And then after that, analytics and measurements. ये जो जितने भी चीजें हमने कही हैं, इन सबको एनालाइज करना है। क्या ये चीजें मुझे फायदा दे रही हैं? नहीं। जैसे इन्होंने अभी कहा, email marketing is a dead thing. For him, it is dead. But for me, it's not dead. Because it's giving me dividends. लक्स का नाम सुना है आपने? लक्स साबुन का नाम सुना है? ओके, ग्रेट। हमाम का नाम सुना है? नहीं, मुझे मजा नहीं आता है ऐसे बोलने में। यस, हमाम का नाम सुना है? यस सर। Go through all marketing companies, surveys, reports. You will find Hamam was going in loss, but the other products of the companies were making profits. The company management decided that we cannot discontinue Hamam because emotions are associated with Hamam. Because of Hamam, we are selling more number of products. So overall productivity is higher. Overall profit is higher. So sometimes this goodwill matters a lot. Goodwill का नाम सुना है ना? This goodwill भी sell करता है. That's what is analytics and measurements. Then what is next? ये हमारा बहुत poor है. ये हमारा बहुत ज़्यादा poor है. A risk साहब, ये हमारा बहुत poor है. और आपकी इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा important है. जैसे इन्होंने कहा कि हम mentorship driven tech trainings दें, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है जितने भी customers हमारे पास में आए वो better placed हों. That is, they are managing that relationship. ये जो customer CRs, customer relationship management है, इसके लिए भी बहुत सारे tools हैं, हम अभी देखेंगे. 5 मिनट आप मेरे साथ में bear करेंगे. That we'll be discussing what this CR is. And what is next? कभी कभार आपको इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा लगता है कि इसको मुझे जरूरत नहीं है, बट एक बार अडैप्ट करिए. एंड वंस यू अडैप्टेड, देन यू हैव टू इनोवेट ऑन दैट. मैंने अभी कहा, जैसे इन्होंने भी कहा कि ईमेल मार्केटिंग नहीं चलता, बट जब आप ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, वो आपको डिविडेंड्स दे रहा है, कोई और टूल उसके साथ में मिला देते हैं, इट इज गिविंग यू मोर डिविडेंड्स, यू कैन यूज दैट. दैट विल बी द इनोवेशन. फाइन. Now let's go by one to all these elements. Let's start with, what is the first one? Market research. आप देख सकते हैं पूरे tools दिए हुए हैं. क्या आपके पास में tools हैं? Surveys, meetings, analytics, keyword research tool, competitors analysis, then data visualization, CRM and AI powered. मैं आपके साथ में पूरी प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँ. जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसको हम 16 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. पहला पॉइंट आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? हमने बात क्या करी थी पहली? मार्केटिंग रिसर्च की. दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. That has to be very strong. और अगर हम सर्वे करते हैं, then what are the options available?
Google Forms, Monkey. कराया कभी यूज आपने? Yes. Then अभी आपने खुद कहा Monkey surveys. These are top notch tools. इसमें statistical analysis भी होगा. Generally, business houses they do use Monkey survey. Reason for that is it's giving you data analysis as well. आपने एक क्वेश्चन के हिसाब से जितने भी रिस्पॉन्सेज लिए हैं आप उसको एनालाइज करके देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है. ठीक है, ट्राई कर सकते हैं. देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Meeting. कोविड ने हमें ये सिखा दिया. अदरवाइज कोविड से पहले हमें नहीं पता ये जूम क्या होता था, इसलिए इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. Microsoft Teams and Zooms, there are good number of apps nowadays which are in the market. Then what is next? Analytics. आप में से कितने लोग Google Analytica यूज करते हैं? Great. See, I could see only those education companies. They are more. देखिए ये कितने खतरनाक लोग हैं. ये Google Analytics यूज करते हैं ये देखने के लिए कि what are the prospects of my business with respect to the candidates as well. But we as entrepreneurs don't do that. And it's available with you. इसके लिए कोई मशक्कत नहीं करनी. Are you supposed to pay for it? No. In case the quantum increases, then in that particular case it's required. But for a startup, it's not required. Are we together? They even give you free Yes, they even give you free. Even they do transfer credits to you. credits. Am I correct? Then what is the next? ये थोड़ा सा अगर आपको और ज्यादा एक्सपर्ट सॉल्यूशन चाहिए, then Adobe Analytics is there. Better than Google. But इसके लिए जितना ज्यादा शुगर डालेंगे उतनी ज्यादा मीठी चाय. इसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन देना है. Then ये बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है. और ये किसके लिए काम होता है हमारा? एनालिटिक्स. आपके ब्रांड से रिलेटेड कितने हिट्स हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, ये पूरा डेटा आपके पास में दे देगा. और आप मोबाइल फोन से, लैपटॉप से सब काम हो जाएगा. और आपको कोई प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है. If you know how to create an email and send it, then you can use these tools as well. Then what is the next? आपने अभी कहा हम एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं. आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो मैंने कहा था कि कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं. तो ये टूल है गूगल का जो आपको हेल्प करता है कि क्या कीवर्ड्स होने चाहिए आपके बिजनेस में. If I write agricultural university, it will suggest me these can be the keywords, possible keywords. Am I correct? You can use those keywords in order to increase your hits. Small mistake, that is Google keyword plan. Okay, fine, no issue. यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत हो गया होगा, DR को D होगा, कोई मसला नहीं है. I'll tell you. What is the next one? But this is not the end of the story. There are more than 50 to 60 tools which are available for this keyword planning. It's a buzzword in SEO industry. Am I correct? More than that. It can be more than that. Is it fine? क्या हमने याद रखा? पहला सर्वे के लिए हम एक ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं. देन दूसरा मीटिंग्स, देन एनालिटिक्स, देन कीवर्ड्स. मैंने दो यहाँ पे लिखे हैं. It's just to sensitize you. And what's next? Have you heard about this word? ये दिख रहा है सबको? SWOT analysis. Yes, SWOT analysis. हमारी एक प्रॉब्लम क्या है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको SWOT एनालिसिस करना चाहता है. मैं नहीं मानता ये. मैं कहता हूँ अगर आपको सुबह उठ के कोई भी काम करना है उसको SWOT एनालिसिस. हर मोड पे, हर वक्त, every time you have to see what are the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Now when I say that strengths and weaknesses is known to you, opportunities is known to you and threats, आप कभी कभार क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं. that what are the good points of my competitor? Can I attribute those points in me so that I can come up with a product which is better than my competitor? Because that will give you an edge in the market in order to have more market share. So you are having tools for that as well. So my first tool is SimilarWeb is one of the tools. Then I do have SpyFu, SPYFU, or I can use BuzzSomo. These are only few popular tools, but there are good number of tools. ये आपको freebie versions देते हैं, but जब आप high end facilities चाहिए तो ये आपसे पैसा लेने की कोशिश करें. Am I correct? Fine. So what did we see?
We did check that अगर हमें competitive analysis चाहिए, competitive edge चाहिए, then we can use these tools as well. But in current scenario, the size of data has increased. ये data जो हमारा है customer से related, product से related, ये बहुत बढ़ गया. Now we need tools which can analyze this data. So for that, I do have business intelligence tools like Tableau. It's one of the very good tools which we can use, or we can use Zoho. किसी ने कहा था? Zoho is actually a complete solution. Zoho can also be used for that. Business intelligence based solutions, wherein it will help you in streamlining your decision making process. Who has other? Yes, it has CRM also. CRM is also, they are very well known for it. और आप जो ये Gmail वाली services देख रहे हैं ना, Zoho was having it way back in 2010. If you happen to create an account in Zoho today, they'll charge for it. But if you have created already in 2010, then they will not charge. Email services भी हैं, और वो बहुत सारी services जो आप Gmail में देख रहे हैं, वो पहले ही उन्होंने रखी हुई हैं. They also give like to some partners, like the entrepreneurs who are starting up, around 2 lakh rupees for 1 year. They can use any of. They can use it. Very good, very good. The same pattern Google is also having. वो क्या कहते हैं आपसे कि आप 20,000 points deposit कर दीजिए, they'll give you extra 20,000 points. Then you can use advertising on Google. ये सारी जो आप देख रहे हैं ना advertising, when you write, let's suppose you are writing agriculture university and then search comes up, there are paid clicks and unpaid clicks. या organic नहीं inorganic. ठीक है ना, ये जो पेड वाला मैकेनिज्म होता है ना, ये कंप्लीट मार्केटिंग है. और इस मार्केटिंग के बेसिस पे जब आप देखते हैं, you have to pay with respect to every click that you are opting for. Same way, Google is giving you some additional features as well. आपका मार्केटिंग भी उसमें कवर हो जाता है और आपका कीवर्ड वगैरह ये सारी चीजें उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं. And do remember one more attribute. हम आजकल buzzword यूज करते हैं AI. AI powered insights भी हमारे पास में है जो हम मार्केटिंग रिसर्च में यूज करते हैं. That is Crayon and Trend Analytica. They are very good tools. Crayon is one of the best tools, to my understanding. आपकी requirements को देखते हुए, it can be different. Okay. Have you heard about TOME? TOME. क्या आप सब लोग एक बार हमारा लाइट का कुछ हो जाए, मोबाइल फोन पे देखिए TOME. TOME. Log in and click on generate a logo or generate an image. ठीक है, फिर अपना आइडिया दे दीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट का है and see what image is generated. TOME. मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है, और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. Give any idea? You can generate presentations, you can generate Word documents, image, logos, everything. हम बहुत जल्दी में हैं. हम जो ही कुछ जनरेट करते हैं हम उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं. ऐसा नहीं करना, अपना डिजाइन क्रिएट करें. दिस वाज जस्ट टू शो यू सम आइडिया दैट यू कैन यूज दीज थिंग्स टू गेट बेनिफिट. यस, लोगों को लग रहा है कि गूगल नहीं पकड़. माय गॉड. There are so many parameters. ओके, चले मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ एक चीज. आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमारे पास में एक टूल होता है जो लाइसेंस वर्जन है, टर्निटिव. इसका काम क्या होता है, ये देखता है कि आपने कितना कॉपी किया है और किस सोर्स से कॉपी. जब चैट जीपीटी आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाउ हमारे लिए प्रॉब्लम है, वी नीड टू कम अप विद समथिंग एल्स. नाउ व्हाट दे हैव डन इज the Turnitin is as it is same. They have added one button to it, and that button is AI. और जब आप उस AI वाले बटन पे क्लिक करेंगे, it will give you an idea. Chat GPT से कितना कॉपी किया है, Bing वाले से कितना कॉपी किया है, किसी और टूल से कितना कॉपी किया है, Tome से कितना कॉपी किया है.
So you can get just an idea. We don't need to worry about anything. मुझे कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है, AI पे क्लिक करना है, it will give you the whole idea. Yes, Janu. There is another AI tool which paraphrase this shelf. Grammarly is also one of the tools. Yes. इसमें क्या होता है, हम synonyms करते हैं, but do remember one thing. Whenever you write anything, copy किया आपने, उसके बाद में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें. अब आप उसको paraphrasing कर रहे हैं. जब आप paraphrasing करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें दोबारा से लिखनी पड़ती. So it means you are understanding it, then you are portraying it in your own words. There is no harm in that. Why should you worry about it? So if you are copying and pasting, that's not a problem. ठीक है? मुझे बोला गया presentation देनी है. I went to ChatGPT and got all contents and pasted over here. That's it. आप अपना दिमाग यूज करिए, फिर आप contents को as it is रखिए, कोई मसला नहीं. But do remember there are tools which we can use to find out that from which source you have copied. ठीक है? Recently, sir, ChatGPT जब आया तो Oxford में एक student 21 years old. Okay. उसके अगेंस्ट में 0GPT लॉन्च करा. Okay, 0GPT, yes. उसमें वो कंप्लीटली दिखा कि कितना AI है, कितना कमेंट का दिखा. और गूगल ने रिसेंटली एक एल्गोरिथम अपडेट रोल आउट किया. इसमें सिर्फ फोकस है कंटेंट. Very good. उस बेस पे वो थोड़ा वहाँ पे बहुत सारी जो वेबसाइट्स पे जो ट्रैफिक था वो Decline. Good. What was our first point? Market research. And second, brand strategy. मैंने थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लिया. These are some of the tools that you can use, like SWOT analysis. Microsoft Word आप यूज कर सकते हैं, आप Excel यूज कर सकते हैं, और अगर आपको और प्रोफेशनल चाहिए, then Lucid Chart is one of the tools which you can use for developing your SWOT analysis. Then you have brand archetype assessments, brand identity guidelines templates भी available है. Competitor analysis tool जो हमने अभी मार्केट रिसर्च में डिस्कस करा, SEM Rush भी है, Spyfu भी है, और ब्रांड वॉच भी है. ये सारे आपके टूल्स अवेलेबल है. ये मैंने खाली टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. If you wish, what I can do is organizer साहब का. Okay, I'll be sharing this PPT with you. You can share with everyone. Fine. And if anybody needs complete template analysis of all these tools I have, that document I will share. Sure, that's great. That's an added on advantage. Fine. Then after that, मैं यहाँ पे आपका ध्यान चाहूँगा. सालिक साहब, और तो नहीं हो रहा है? ईमानदारी बताइए, क्योंकि सबसे टफ जॉब पता है क्या होता है? खाना खाने के बाद में ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करके उनको जागते हुए रखना. मैं देख रहा हूँ, बड़ा टफ है. Because I am in between you and your naps. और मेरी बुरी आदत है, मैं किसी भी चेहरे को छोड़ता नहीं हूँ. और एक बार मैंने आपके साथ में इंटरेक्ट करा, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई. ठीक है, these are branding elements. What is the first element? मैंने आपको कौन सा टूल अभी बताया? Tone. And do remember, gentlemen, it's my humble request to everyone. Your mind is fertile. It's having innovative ideas, but shortcuts use मत करिए. There are no shortcuts in life. Neither there are any free lunch in this world. Do remember, no free lunch in this world. Logo देखें, design करवाएं, लेकिन come up with your own logo. Recently, just 1 week back, we are having 2 students who are here in first year, whom are studying HORTI-BUSINESS management. They got an assignment, and one day I was discussing with them that I'm not happy with the logo that you have. And one of the gentlemen, out of those 2, one is male, one is female. Male gentleman said that, sir, just give me 1 day and tomorrow you will fall in love with our logo. And that's an honest reply from my side. Next day when he came up with the logo, he's a student over here, studying in first year. The logo was such beautifully designed that I truly did fall in love with it. What was their business plan was getting portrayed in the logo, each and every bit of it. That's what matters. और हमें प्रॉब्लम क्या है? माइंड में हमें सब कुछ, लेकिन कागज पे हम. This is not an appropriate communication. If you are able to communicate what is in your mind on a piece of paper, you will be able to
translate that into logo. And these are some of the tools which can help you look up and hatchful in designing logo. But do remember, don't copy and paste. ठीक है? And अभी मैं आपके सामने एक शेयर करना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। मैंने अभी कुछ लोगों से कहा कि आप मुझे कुछ लोगोस दे दीजिए, और मेरे पास में कुछ लोगोस अवेलेबल हैं। ओके, हम थोड़ा सा करते हैं। इससे पहले कि मैं फिर से ब्रांडिंग एलिमेंट्स पे जाऊं, I personally see this logo as one of the wonderful logos. क्या 2 मिनट के लिए आप इसको ध्यान से देखेंगे? एलिगेंट है। कलर कॉम्बिनेशन कैसा है? कलर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब आप इसकी तरफ देखें, आर यू फीलिंग स्ट्रेस ऑन योर आईज? नो, बट इट इज कैची, isn't it? And the way S&P has been written, I personally see that the message is getting conveyed. And this S&P is what? Yes. Yeah, this technical error in this logo. I accept. Yeah. There can be 100, 1000 technical errors. Yes. I'm not worried about it. I'm worried about the idea. Okay? Great. Okay, fine. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं कुछ लोगों की यहाँ पे बात करूंगा। ओके, यस। देखिए बेटा, हम यहाँ पे फैमिली में हैं, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? I don't have any problems with the logo, but I do have the placement of text and the color. Oh, great! आपने मेरे मुंह की बात सुनी है। ये जो ना, इसको हम कहते हैं observant. Observant. कलर में मुझे आपके साथ में मैं सहमत नहीं हूँ, और ये जो आपने लिखा है Alignment. नहीं, alignment. What is the message that you want to convey? You need to rethink on that. And जो आपने color combinations, message is very good, awesome, but you need to think about it. हम हर किसी perspective को देखते हैं. Then there's one more logo. Yeah, that's great. Is it fine? Font issue. ये जो सारे लोग आप बैठे हैं अभी, ये आपके इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे और निखारेंगे, ठीक है? AL is a font issue. Don't worry. लेकिन इससे क्या होता है, देखिए हमेशा एक चीज का याद रखिएगा, जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है? आजकल AI काफी चल रहा है, तो इसलिए AI लग रहा है। AI भी लग रहा है, ठीक है ना? बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हर रिस्क कहीं खो गया है। इसमें ये ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन और इस ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा सा इस पे काम करना है। मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है, आप डार्कनेस से एक नई दुनिया की तरफ ला रहे हैं। इट्स अ रे ऑफ होप, दैट्स व्हाट आई डू अंडरस्टैंड, बट इस पे और थोड़ा सा निखार डाला है। सजेशन मेरी है, अगर थोड़ा वो उर्दू वाला कुछ टाइप देखिए, बट मोस्ट ऑसम। सी दैट्स रियली गुड, बिकॉज़ उसमें जो कैलीग्राफी है दैट कैन डू वंडर्स। और अगर आप चाहे रिश्ता गुश्तावा सब मिला के अल रिस्क उर्दू में लिखिए, बट इट शुड पोर्ट्रे वाजवा। वो जो आप बोल रहे हैं, बट लाइक he is into food. Yes. So the colors used, maybe the graphic designer can say right कि should connote, जैसे food में कर रहे हैं तो वो colors भी आने चाहिए, ठीक है? हम यहीं पे देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। गुड। अब हम 2 मिनट के लिए वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। अब हम दोबारा से इस स्लाइड को देखेंगे। Now I don't need to explain much about it. What are the branding elements? Then आप ये देख रहे हैं, I did mention logo. Then what is the next one? Font. आपने within a fraction of a second कहा font में गड़बड़ है, spellings में गड़बड़ है, और हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स करते हैं। और जब जल्दबाजी में हमारे पास में लोगो बन के आता है, मेरे पास में टाइम नहीं है, आप इसको चला लेते हैं फिलहाल, फिर बाद में डिजाइन करेंगे। Don't compromise on this. This is the face of your product. Then what is next? Color. आप सबने ऑब्जर्व किया, मैंने तो नहीं बोला ना कुछ। Then what's next? Tag on. यहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं।
हम दुनिया का पूरा कंप्लीट टैगलाइंस भी उठा कर देखें, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। स्लोगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने लिखा ई करके कुछ, try to correlate it, it will give you a good dividend. Then what is next? फोटोग्राफी यूज। और आजकल जो हम देख रहे हैं ना फोटोग्राफी की क्वालिटी, it has to be I should not say below par, it should be above par. आपको देखना है आपका ऑडियंस कौन है। जैसे इनका पिकल है, क्या एक टॉडलर वो पिकल यूज करेगा? टॉडलर 5 साल का बच्चा। आपका ऑडियंस कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजाइन एज पर द ऑडियंस, ठीक है। Then what is next? Iconography, symbols. Do I need to explain it? No. Then what next? Brand voice. मैंने अभी इनको सामने लाया था और मैंने इनसे कहा था कि आप एक्सप्लेन करें अपने प्रोडक्ट के बारे में। So you have to come up with a voice which is appealing and which is giving you a message full of confidence and full of trust. मार्केटिंग वाला नहीं, ये ट्रस्ट की बात हो रही है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है। That's very much visible once your tone is appropriate. ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। What is the next? These are all branding elements. Then what next? Packaging. Then sound and music that you are giving to advertisements or you are branding, कैसे आप करते हैं? Then motion graphics और animations, ये भी एक important role play करता है अगर आपके brand में वो आपने ऐड किया हुआ है। Okay, how many of you are on Instagram? Great. आप Instagram के लिए वो छोटे-छोटे वीडियोस नहीं बनाते 10 सेकंड के? रील्स को छोड़ दीजिए। जैसे मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिखाना है, तो वो विजिटिंग कार्ड पहले शुरू होता है ब्लैंक, देन इंप्रेशन जनरेट होता है, फिर पूरा विजिटिंग कार्ड आता है। ये हार्डली 5 सेकंड में कहानी खत्म हो जाती है। मोशन, यस, ठीक है ना। तो हमारे पास में प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कैनवा। हम कैनवा में जाते हैं, मोशन बनाते हैं, उससे क्या होता है, नयापन आता है। विजिटिंग कार्ड सब लोग देख रहे हैं, आपका फोटोग्राफ सब लोग देख रहे हैं, बट उस फोटोग्राफ को स्टार्ट करना 5 सेकंड में मूवी कंप्लीट, गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो कैनवा इज अवेलेबल, यू कैन डू दैट। वो मोशन ग्राफिक्स भी आप कर सकते हैं। देन व्हाट इज नेक्स्ट? हम इन एट्रीब्यूट्स पे कभी काम ही नहीं करते। हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, बट हम ब्रांड स्टोरी को that needs to be taken care of. And then what is the last one? Consistent. To remember, ये जो पहला वर्ड है ना कंसिस्टेंसी, मैं इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी दूं, क्योंकि हम सोडा वाटर की तरह काम करते हैं। Once you stir it, ये पूरा जाग निकल जाता है बाहर, और उसके बाद में 5 मिनट बाद everything is back to normal. I'll put it like this: easy love ends in comedy, but true relation calls infinity. अगर आपको infinity तक जाना है, then you have to fall in love with your product. If you will not do that, neither the story will come nor consistency will. Consistency will come when only you will fall in love with it, and then you will start living it. And once you start living it, then real wonders will happen.